Welcome to our special show called Ketu Vigyan. I am Nidhi Kansal, कृष्णनिष्ठ मंदिर अंबाला की केयरटेकर। फिलहाल हूँ निश्चल सूर्य मंदिर क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में। मैं हूँ एक एमटेक यानी कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, बट ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एज अ नेचुरोपैथ, बिकॉज नेचर से, प्रकृति से हम सब कुछ ले सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। बात हो रही है टेक्नोलॉजीज की, दोज टेक्नोलॉजीज विच कैन एक्चुअली चेंज योर बिहेवियर, विच कैन एक्चुअली change the environment or ecosystem around you. Yes, the technologies which can make this earth pollution free. So what is all about this climate change and pollution? Let's discuss with कुचनाकर भैया दिल्ली वाले, because ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कहीं ग्लेशियर्स पिघलते हैं या कहीं नदी का पानी गंदा होता है तो ये डायरेक्टली हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, हम चाहें या ना चाहें। सो दिस बिकम्स आर ultimate responsibility or our majboori that we take care of our planet earth, we take care of our ecosystem. But what is sustainable model which is to be adopted for a healthy planet? Let's discuss with Kuchnakar bhaiya Delhi wale, an expert in working for climate change since last 20 years. Ashwani ji, who is a graduate from IIT Bangalore, an electronics engineer, is committed towards reducing rejection from the society. प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। स्वागत है आपका आज के हमारे इस शो केतु विज्ञान में। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक स्वस्थ प्लैनेट की, हेल्दी प्लैनेट की, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशंस हो या सारी गवर्नमेंट्स हो बात तो कर रही हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन होता दिखाई नहीं दे रहा। सस्टेनेबल मॉडल, ऐसा मॉडल जिसके द्वारा हम प्रकृति को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रख पाए। क्या सोल्यूशन या टेक्नोलॉजी सजेस्ट करते हैं आप? आज इसी के बारे में हमें कुछ बताएं। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या है? टिकाऊ। टिकाऊ तो टिकाऊ तो कोई चीज होती नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब ये है, जो पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में जब बात की जाती है, कि एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसपे आज हमने एफर्ट लगाया उसका असर रहे। ऐसा ना हो कि आज हम मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है, कल को वो फिर से वैसी की वैसी सिचुएशन हो गई। यानी तुम कहने की कोशिश कर रही हो कि आज तो हमें भूख लग गई तो हमने खाना खा लिया और एक हफ्ते तक खाना ना पड़े। इज दैट सस्टेनेबल? खाना तो पड़ेगा, तो व्हाट वी डू कि हमारे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम रहे, एक रेगुलर सिस्टम रहे जिससे हम रोटी खरीद सके या पका सके, तो दैट इज अ सस्टेनेबल सिस्टम जिसमें हम सरवाइव कर पाए। तो इसका मतलब है कि सस्टेनेबल वर्ड इज कनेक्टेड टू ओनली इनकम। नॉट एग्जैक्टली इनकम। सस्टेनेबल, देखिए, सिर्फ पैसे से हम सब कुछ नहीं कर सकते। हमें एक मॉडल चाहिए होता है, एक सिस्टम चाहिए होता है किसी भी नीड को पूरा करने के लिए। तो उस पूरे सिस्टम को सस्टेनेबल कहने का मतलब कि ये सिस्टम हमेशा यूजेबल रहे। तो क्या ब्रीदिंग इज सस्टेनेबल? If breathing is not sustainable, then how anything else can be sustainable? Tell me, show me one example. If breathing is not sustainable, then how can anything be sustainable? Tell me. So we are actually running behind a hawks.
We are running behind a, I don't know what the word should call, not even ghost, hawks. Nothing is that, this thing doesn't exist at all. If breathing is not sustainable, then this sustainable world itself doesn't exist at all. So what will you talk on sustainable which doesn't exist? What is the point talking about a subject which does not exist? It does exist. जैसे कि पॉल्यूशन की ही हम बात करते हैं, क्लीनिंग की, सफाई के अभियान चलाए गए, तो अब आज हमने किसी जगह की सफाई की, कुछ दिनों बाद वापस से सिचुएशन हमें वहां वैसी की वैसी ही दिखी, तो ये समझ आया कि मॉडल है, ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है. नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि भूख शुड नॉट बी सस्टेनेबल. आर वी टॉकिंग दैट? Hunger should not be sustainable, because hunger is sustainable. It comes back, it comes back, it comes back. There has to be a sustainable model through which we are able to satisfy our hunger. So there has to be a sustainable model. मतलब भूख तो लगेगी, हमें पता है. So that is why we get a house, we get a kitchen, then we see that from where we are supposed to get groceries, and then we should have some money, and who will go and get the groceries. So we create a model to this is the problem. This is the problem. First you have to understand what is sustainability. Sustainable कहते किसको है? जब तक ये नहीं समझोगे, जब तक तुम ग्रोसरी और भूख के अंदर ही फंसे रहोगे, जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं. जबकि hunger is not a part of human body. It's a myth that the human body feels hunger, especially males. Males do not feel hunger. They have such a beautiful sustainable system. ये ज्यादा हो रहा है अश्विनी जी. भूख लगती है, बच्चे को भी लगती है, बड़े को भी लगती है, एंड दैट इज आपके कह देने से कुछ हो भी नहीं है. बच्चे को भूख लगती है तो बच्चे के पास, माँ के पास दूध होता है, मिल्क होता है अवेलेबल फ्रीली, तो शी फीड्स इट. जब तक उसको जरूरत है, जब तक वो फीड करती है, उसके बाद जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने उसको फीड ठीक से नहीं किया, तो इसीलिए उसकी जरूरत बनी रहती है. शी एश्योर्स दैट उसकी जरूरत बनी रहे. अदरवाइज मेल डज नॉट रिक्वायर एनी हंगर. मेल डजंट, हंगर डज नॉट एग्जिस्ट इन मेल. That is the key, that you have to understand this meaning of sustainability at the first point. That if you are talking of hunger, और बच्चे और बड़े की बात कर रहे हो, तो बच्चे को भूख लगती है तो उसके लिए मिल्क इज ऑलरेडी मेड अवेलेबल बाय नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट. That is sustainable, and it has been happening since this system of reproduction has come down. It is there since that time. So nothing new I am talking. So everything is sustainable. If you talk of sustainability, then everything is sustainable. Where is the problem? Then what we are looking for as sustainability? ये एक फैक्ट है कि हमारे प्लैनेट की जो कंडीशन है, डे बाय डे वो डिटोरेट हो रही है. द एयर क्वालिटी, द वाटर क्वालिटी, हम लोग कर रहे हैं उसको डिटीरियोरेट. हम लोग, इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है. सी, एनिमल्स कैन नॉट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ह्यूमन बीइंग्स कैन, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर ट्राइंग टू become animal to understand that what responsibility we should take. That is the problem, that human beings are not interested in reducing their own contribution to the air, not their own contribution of pollutants to the atmosphere. They are not willing to do that. That is the problem. Unless the human beings, males, especially males, here I am talking precisely, it is a gender based. Male does not have any hunger. Male के केस में hunger does not exist. It has been inserted into him
by doing wrong pregnancy period, by handling wrong pregnancy period, by handling wrong, the pregnancy period is 3 years and we are restricted to 9 months. That is the problem. That we are inserting those factors which forces us to look for solving them. Again, sustainability you are talking about. We are trying to solve the pollution by converting into another pollution product. Imagine what we are doing. That plastic अगर वेस्ट है तो उस वेस्ट से दोबारा प्लास्टिक बना रहे हैं. तो हम कर क्या रहे हैं? अपनी वेस्ट को दोबारा से वेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. So we are not interested in looking for sustainable solutions. We are just passing time. Or in fact, we are wasting our life. Human life is completely getting wasted. Absolute terms. Especially male's life. Males today doesn't know what they are doing, what they have to, what the sustainability, males are working for it. Imagine, they cannot. Male is explorer by nature and he has started working on exploring how to convert one waste into another waste. People are not trying to convert one waste into another waste. People are trying to recycle the waste. I mean, recycling. So you are trying to give a new word to it so that people remain confused. वेस्ट से हमने कुछ प्रोडक्ट्स बना लिए. अभी आप गडकरी जी का एग्जांपल देते हैं, उन्होंने वेस्ट को यूज करके सड़कें बनवा ली, या वेस्ट को यूज करके हम चंडीगढ़. नो, इमेजिन कि वो ठीक है कि उन्होंने उसको यूज बेटर कर लिया. See, here the word is that he has used waste in a better way. I can say that the plastic emits such radiations which are very harmful to the atmosphere. That is what everybody talks about. But waste is a plastic or roads is a plastic, it doesn't matter really. It is the consideration is that the plastic emits radiations or throws chemical of that kind which are not visible, but it is disturbing the environment. It is creating pollution in the environment, in the air. So that pollution will remain never. You can never get out of it. So what I am trying to say is that sustainability means convert one waste into another type of waste. That's it. We have to reduce the contribution of pollutants contributed by me. Once I start doing that, then you see where the pollution is. Show me one place you can find a pollution. That is a very long process. कि सारे ह्यूमन बीइंग्स ये सोचें कि मेरे द्वारा जो पॉल्यूशन कंट्रीब्यूशन है वो नहीं होना चाहिए. अभी आज की सिचुएशन ये है कि पॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हम पहाड़ों पे जाएं, हम नदियों को देखें, हम ग्लेशियर्स को देखें, आवर इकोसिस्टम इज एक्चुअली गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड दैट इज अ फैक्ट. तो अब इसके लिए क्या करें? आई कैन नॉट मेक क्रिएट अवेयरनेस इन ऑल इंडिविजुअल कि ठीक है तुम पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन कम करो एंड एवरीबडी स्टार्ट डूइंग सो. वन थिंग. सेकंड थिंग, देयर आर इंडस्ट्रीज, देयर आर फैक्ट्रीज which are throwing waste out. अब वो फैक्ट्री सारी की सारी तो बंद नहीं कर सकते हैं. That is not possible practically. Ozone layer में तो all these factories, unfortunately, all these factories are converting waste into another waste. The hazard of the first waste was less. The second waste, when converted from one waste to second waste, they have converted it has become more hazardous. So, do you think we want to continue with the factories giving us
hazardous waste and we don't want to reduce our waste, then there is no point talking about this subject at all. We are trying to learn to live with the hazardous, more and more hazardous waste. ये बात आपकी ठीक है कि सबको अवेयर होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को दे शुड बी मोर सेंसिबल, लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट पे इस तरह से बात करने लगते हैं तो दैट बिकम्स लाइक कि हमने तो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ लिया या हम तो ज्ञान बांटने चल रहे। द गेम इज दैट व्हाट शुड बी डन। So another word, waste has created another word called spirituality. So this is also a waste conversion of waste from one waste to another waste. We are just roaming around in the words, that's it. So we have to actually start working on contribution of my pollutants to atmosphere, minimize them, start minimizing them. Unless you start doing that, there is no point talking about spirituality. People are, see, vested interest. The people who want to convert the one waste to another hazardous waste, they will say you are talking spirituality. They are more dangerous people in the society than the other ones, normal ones. You should discard them immediately, instantly. The person who starts using the word spirituality for knowledge, throw him out of this society. Then only you can save the society. Yes. जी। सीधी सी बात, मेरे घर के पास मान लीजिए कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, उस तालाब में बहुत ज्यादा गंदगी है। आई नीड टू क्लियर दैट वेस्ट। मैं चाहती हूँ कि वो तालाब साफ हो जाए, उसमें वहां पे कीड़े मकोड़े एंड गंदगी रहती है तो किसे अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू क्लियर दैट वेस्ट। अब मैं उसके लिए आप कहेंगे कि जो आसपास रहने वाले हैं वो सब लोग अपने पॉल्यूशन वेस्ट को कम करें, अपनी ब्रीदिंग को ठीक करें, तो नेचुरली ये बहुत नहीं, मैंने ये ब्रीदिंग वर्ड यू हैव यूज्ड, आई हैव नॉट यूज्ड। I said reduce the contribution, and I can assure you the pond which is so dirty will automatically get cleaned if you start contributing, if you start reducing your contribution of pollutant to the atmosphere. Your earth is a self-sustainable system. It will convert that waste into energy automatically. You don't have to worry about it. You stop reducing your contribution. That is the key. You are working other way. You are trying to take out the pollution from there and put it on the earth. What will earth do? Earth will again give you the kide makode only. So do not worry about the waste lying in the pond. Do not worry about the waste lying in the ocean. Do not worry about the water not available for drinking. Forget it. You just simply stop contributing your waste to society, atmosphere, ecology, environment, and then you see the results. Within 9 months, the entire earth can be cleaned from pollution, provided each one starts reducing its contribution of pollutants to environment. जी। अगर आसपास के लोगों ने या जनरल पॉपुलेशन ने अपना पॉल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम करना भी शुरू कर दिया, इससे जहां ऑलरेडी वेस्ट है, जैसे कि दिल्ली के बाहर हम देखते हैं इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, वो कैसे ठीक हो जाएगा, वो तो कैसे कम हो जाएगा ना? वो तो ऑलरेडी हो गया ना। वो तो ऑलरेडी गडकरी हैज our minister Gadkari ji has already done that. He has already started using that waste to put it on the roads. That has already started taking place. It seems some 20-25% waste has already reduced. So recycling, see, better recycling procedures have been made available. I am not denying to that. But what I am trying to say is that if we stop contributing our waste, individuals' waste
waste to environment, then I can assure you whatever environment has, whatever pollution environment has, it will get cleaned by itself automatically. Nature has made that system. That system is available in nature. The lightning, see, try to understand what I'm saying. You should not convert one waste to another waste. Convert waste into energy. If you start converting waste into energy, that energy will start eliminating pollution which is lying on the earth. That is what I'm trying to say. I'm not trying to say that you don't worry about it. I said you start worrying about your contribution, start reducing your contribution to the atmosphere, environment, and you will see the results. You will not find a single particle pollution on earth. You start doing it from today. Exactly, it will take 9 months, 9 days, 40 weeks, 300, not even 300 days. Okay, I start reducing my contribution to pollution and people start that. But what about industries? What about factories? What about those units which are actually creating pollution? What about international? Because they are also very simple, very simple, very simple, very simple. Once you start converting waste into energy, then you will never have a waste. Waste will not be existing. Right now we are converting, factories are there to convert waste into waste. So factories will automatically go, they will die. You would not require them. If you don't convert one waste into another waste, sustainability is not that you convert one waste into another waste. Sustainability is you need energy. So sustainability is that convert waste into energy. अश्विनी जी, सोलर एनर्जी को यूज करना, सोलर एनर्जी एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बताई गई और इस पर बहुत काम हुआ भारत में, बाकी देशों में. Again, sorry. Again, we are not using solar energy. We are using only solar light. Why don't you understand things? Energy is not electricity. Energy is not electricity. You are confused. There we are only converting solar light into electricity, nothing more, and then we are reconverting electricity into light. Imagine what we are doing. What a stupid idea we had started with. Okay, we are converting light into electricity, and then electricity say we are putting on the light again. What we are doing? Try to understand. It is not energy. Solar energy you are not using. Don't play with the words. We are using only solar light to convert into a solar light. One is natural solar light, another one is man-made solar light. And that solar light is going to give you definitely more problems compared to the solar light given by the sun. Ji. What kind of energy you are talking about? You are talking about convert your waste into energy. But what kind of energy? Yeah, that way you have to understand that I am talking about energy, pure energy, not the parts of the energy. Electricity is one part, electromagnetic waves are another part of the energy. There are two different areas we are working on, which is a mess. We should start working on one product called energy. Once you start working on pure energy, then you will understand the difference between pollution. You will get rid of pollution totally. It is the pollution is that we are trying to वो कहते हैं ना कि योग को सीखने के लिए डिसेक्शन करते हैं हम लोग. We are trying to learn yoga with dissection. You cannot learn yoga with dissection. You can learn yoga only by yoga, not by dissection. काट कर
करके छोटा नहीं किया जाता है। माइन्यूट होना और काट देना, काट के छोटा कर देना या माइन्यूट हो जाना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाट वी आर डूइंग इज सस्टेनेबिलिटी के नाम पर वी आर कटिंग देम डाउन। पेड़ काट दिए हमने, पत्ते काट दिए हमने, फल काट दिए हमने, सो वी आर कटिंग देम डाउन। एंड रादर देन दैट, इफ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन एनर्जी, then there is no cutting down, we are just reducing or improving. So waste, if you want to understand what is the conversion of waste to energy, then you have to understand sound energy first, then light energy, then furthermore we can go. Like sound energy is what we are able to hear. Are we able to hear everything? Our hearing range is only between 20-30 hertz to about 2 kilohertz, 3 kilohertz. That's it. Sound energy is only, we think we are done wonders. Below 30 hertz, all the earthquakes, all the volcanoes, everything works on below 30. And above 2 kilohertz, they work only, dangers, all dangers are below 20 hertz and above 20 kilohertz. So that sound energy, if you have to understand, then you have to understand this, that Shank is a system given by nature which converts your waste into energy. That is a pure energy, sound energy. Similarly, Jugnu, you look for a insect called Jugnu, if you have heard of. It converts its waste into light. So all these examples are available. They are made available by nature earlier itself. But we are, I don't know what we are into. I don't know what we are trying to. So we are not actually trying to talk about energy. We have started using energy as a word for I don't know what. God only knows. So we have to get rid of the jugglery of the words. Yes, जी. अश्विनी जी, अगर हमने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया भी, तो उसका बेनिफिट हमें क्या है? उसका बेनिफिट पूरे इकोसिस्टम को क्या है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखा, और जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं ये प्योर एनर्जी है। आप सोलर एनर्जी या इस तरह की एनर्जीज की बात नहीं कर रहे हैं, जिन पर इलेक्ट्रिसिटी की आप बात नहीं कर रहे हैं, प्योर एनर्जी की बात कर रहे हैं। पर एनर्जी में अगर हमने अपने वेस्ट को कन्वर्ट किया भी, तो इसका बेनिफिट मेरी पर्सनल लाइफ पे या मेरे इकोसिस्टम पे या मेरे एनवायरनमेंट पे क्या होने वाला है? बहुत सिंपल है। आप देखो, आप खाना किस लिए खाते हो, मुझे ये बताओ। क्या आप भोजन, फूड लेते हो, खाना खाते हो, किस लिए खाते हो? एनर्जी के लिए नहीं खाते हो क्या? हाँ, हाँ जी। खाना खाया जाता है अपनी भूख पूरी करने के लिए, गेट एनर्जी आउट ऑफ। सॉरी, खाना खाया जाता है एनर्जी के लिए, भूख पूरी करने के लिए नहीं। खाना खाया जाता है माई बॉडी रिमेन्स एनर्जेटिक। तो यूज डायरेक्ट एनर्जी ना, व्हाई डू यू नीड फूड फॉर दैट? यू कन्वर्ट दैट वेस्ट इनटू एनर्जी एंड यूज द एनर्जी डायरेक्टली। ये कैसे हो सकता है? हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ये प्रोसेस बहुत स्ट्रेट है, सबको क्लियर है। I am trying to give you an example of pure energy. The food which you eat, you get pure energy, and balance waste is thrown out. Is it not? So why do you need to throw waste out? You convert whatever you eat, you convert entire that into energy. Why not?
Where is the problem? You need energy for your body, and you are trying to generate waste to get this much of energy. Try to convert entire whatever you have eaten, convert that into total energy. Why not? Where is the problem? So convert yourself into a machine that whatever you eat, it gets consumed 100% and it gives you energy 100%. जी ये कुछ ऐसा है जैसे हम शायद मूवीज में देखते हैं या सुनते हैं कि दैट पर्सन रिमेन एनर्जेटिक ऑल द टाइम, या अभी भी फोटोग्राफ्स आई केदारनाथ के मंदिर के बाहर स्नोफॉल हो रहा है और एक योगी बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं विदाउट ऑलमोस्ट एनी क्लोथ. तो इस तरह का कुछ विदाउट ईटिंग एनीथिंग, माइंड इट, विदाउट ईटिंग एनीथिंग. दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग ऑल्सो एंड दे आर सिटिंग इन स्नो, बिकॉज खाने का कुछ मिलेगा नहीं वहां पर. तो दे आर एबल टू कन्वर्ट देयर whatever they intake into entire energy. That is the key. That is, and for that you don't need to go to Himalayas sitting in the snow. You can do it at home. जी. उन्होंने जब कुछ खाया ही नहीं, इंटेक ही नहीं लिया, तो वेस्ट कहाँ से आया जिसको एनर्जी में कन्वर्ट किया? अगर उनके पास एनर्जी नहीं होती तो डू यू थिंक ही कैन सिट इन दी सच ए कोल्ड आइस? देन ही मस्ट बी हैविंग एनर्जी. ठंडा अगर होता है तो हम गर्म लेते हैं कि नहीं लेते हैं कुछ? फिर तो इसका मतलब ही इज टेकिंग समथिंग हॉट, सो ही इज एब्जॉर्बिंग सनलाइट and he is converting that light into energy for himself. So light has become food for him. जी. I mean, you mean whatever is available in nature in form of light or energy or air, that becomes food for us, that can become food for us, and we can convert all our into energy. It is a food for us. The only thing is we have not learned to digest it. It is definitely a food for everybody. For each and every person, each and every entity in the universe, food for cell energy, whatever you need, is given by air and solar light. But we have to make ourselves that machine which is able to digest that light or which is able to digest this air to give us full-fledged energy. And that is possible sitting at home itself. Shunt technology is the answer for this. जी. अश्विनी जी, शंट टेक्नोलॉजी से हम अपने वेस्ट को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू पोल्यूशन, ये आप कह रहे हैं कि हम वेस्ट को वेस्ट. See, shunt technology helps you start becoming a machine which starts converting your waste into energy, and by the time you keep practicing it, you will start getting that energy not from food but from air, and after that from sunlight. Sunlight will become your food and air will become your food. जी. ऐसे कुछ ब्रिदेरियंस के बारे में मैंने पढ़ा था. दे वर समवेयर सेटल्ड नियर यूरोप, आई गेस. देयर वाज अ फैमिली who were not neither vegetarians nor non-vegetarians. They were breatharians. That is, वो breathing से ही अपनी सारी needs को fulfill करते थे. That lady got pregnant. Even while pregnancy, she had almost nothing to eat. She only used her breath. Now her children were also breatharians. They were family of 4 and they were all breatharians. We can easily search it on Google. That there is a generation called vegetarians, a community, a caste, you can say. That means you are proving my system.
because I can really find that article over internet. It's available there on Google. I also found it there only. कि ब्रिगेरियंस होते हैं अभी भी, दैट फैमिली इज लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ. दे डोंट ईट, दैट्स इट. उसके अलावा सब कुछ उनकी लाइफ में नॉर्मल है, एंड दे टेक एवरीथिंग फ्रॉम देयर ब्रेथ, नथिंग एल्स दे ईट. I don't know what they do for their whole day, because personally I believe that most of our time is they breathe whole day, bhai. They breathe whole day. They breathe all day. Breathing is a bloody exercise. This is a work profession. We need some work to do. Na? To say I need to go to kitchen, or I need to go to get groceries, or I need to go work because I need money so that I can earn, buy food for me. Even I have studied in a convent जहाँ पे हमें क्रिश्चियंस की प्रेयर कराई जाती थी. तो हम लोग ये बोलते थे, ओ गॉड गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड. मीन्स हम भगवान से भी यही कह रहे हैं कि हमको आज की रोटी देना. अगर हम वेजिटेरियन बन गए तो हम भगवान से क्या मांगेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट पोल्यूशन टू कीप आवरसेल्फ बिजी. आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट? जी आप सीधी बात, अगर किसी की लाइफ में से हम फूड हट ही गया, फूड नाम का कंसेप्ट या कंपोनेंट ही नहीं है उसकी लाइफ में, तो करेगा क्या या करेगी क्या? आई मीन और काम ही क्या है? So you agree to this, that we are trying to convert pollution because we want to keep ourselves busy. What a beautiful statement it has come down to. That we are trying to convert pollution, we are trying to fabricate pollution, we are trying to design pollution of different types. We are trying to work on pollutions only. We are not trying to innovate anything but pollution, way of pollution. We are trying to change way of pollution every day. We are trying to make it more and more hazardous. So that is interesting. I came to know of it today itself, that we are manufacturing pollution. बहुत अजीब सा है कि हम रोटी खाते हैं, ठीक है, वेजिटेरियंस हैं. नॉन वेजिटेरियंस को मैं एक बार को कह सकती हूँ कि दे आर क्रिएटिंग पोल्यूशन, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ ब्लड एंड बहुत गंदगी होती है जब हम किसी एनिमल को काटते हैं. आई पर्सनली वेरी मच डिसलाइक इट. लेकिन वेजिटेरियन कंसेप्ट इज कम्प्लीटली सेफ एंड क्लीन एंड हाइजीनिक एंड इट्स ऑर्गेनिक, इट्स कंपैटिबल विद नेचर. जो भी वेस्ट हमारे फूड से निकलता है उसको हम वापस धरती में डालते हैं तो वो खाद बच जाता है. बहुत जल्दी. That's what exactly I'm trying to say. That we are creating waste to keep us busy. What a surprising fact, which I have come to know of it now only. That we are only manufacturing waste. We are only manufacturing waste. Our entire industry in the universe is, on planet Earth, is trying to create waste only. So the example of breatharian you wouldn't have given. Well, that shows that you don't need to create waste. Why should you create waste? So that is what I said in the first place. वो उनकी पर्सनल चॉइस थी कि वो वेजिटेरियन बन गए. वो लोगों की चॉइस थी. मतलब I mean I don't understand why you need to be. That means you are trying to tell the society that it was their choice. They have stopped reducing the contribution of pollutant to the environment, so they are not wanted in the on planet Earth. Don't you think more people are required of that type? They have reduced the contribution to pollution from their side to zero, and I want that to happen with everybody. ये मानना बहुत अजीब सा है अश्विनी जी कि हम वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं और फिर भी हम पोल्यूशन दे रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में. बचपन से ही जो कंडीशनिंग हमारी है, मेरी है पर्सनली,
वो ये है कि अगर तुम खाओगे नहीं तो मर जाओगे। तुम इट्स स्ट्रेट। बचपन, एक बात मुझे ये बताओ कि तुम बचपन को कब तक दोष देते रहोगे? This is the concept we are growing with. कि if we don't eat properly, we can't remain healthy. If we have to have a balanced diet, we have to have our meals on time. That is connected with our health. That is connected with our efficiency. Listen. Since you were born in pollution environment, so you were taught that. Now I am telling about your children. Teach them how not to contribute pollution. If you start teaching them, obviously this is your prime responsibility, that you have to stop contributing to the pollution. And if you are talking about pollution, then you stop contributing to the pollution. No. Then either you don't talk about pollution at all. If you are starting talking about pollution, then you have to start reducing your contribution of pollution to the environment. And that's the same thing you have to teach to your children. Actually जी, we have got some senses. तो जो हमारी सेंस ऑफ टेस्ट है या जो सेंस ऑफ स्मेल है, ये दो सेंसेस सेटिस्फाई होती हैं या दे गेट एंजॉयमेंट बिकॉज ऑफ फूड. इवन आवर सेंस ऑफ साइट, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर वी गेट रिलैक्स, वी गेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उनको देखकर. Then don't crib about pollution. You want to contribute pollution and then you have to crib about it. I mean, I'm surprised how can you do two things simultaneously, contradictory things. That smell, where did I talk about that you will lose the sense? I never said that. You will start getting taste from air. You will start getting taste of the food as light as food. You will start smelling that air. The smell of the air will tell you that, oh, this is the good smell, I can eat this. The smell of the light will tell you. Light has so many smells. That's what you do not know, because you are stuck with the waste. You don't want to reduce your wastage to understand these things. That is the problem. That light is a full-fledged food. Do you know that? Eight minute. One second. Do you know what is photosynthesis process? What is that? वो प्लांट्स के लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है. प्लांट्स के You are much better than plants. When plants can do, why not you? Leaf of the plant is represented by a rome of your body. It is exactly the same. Each leaf is representing one cell of your body. रोम में राम बसे कहते हैं. उसका मतलब समझो कि अगर आप अपने रोम के राम को जागृत कर लेंगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग फूड फ्रॉम लाइट. Ram ji has given so many technologies which you can never understand if you don't try to reduce your contribution of wastage. You can never understand that Ram ji has given. रोम में राम बसेगा मतलब समझो कि राम इज द नेम ऑफ द सेल. पहले हिंदी में राम जिसको कहा गया है वो हमारी बॉडी के सेल हैं, और राम जी ने बताया कि उस सेल को यूज करने का मतलब क्या है कि हर रोम में राम को बसा लो तो यू विल स्टार्ट गेटिंग लाइट एज फूड. जो आपने कहा कि केदारनाथ में बैठे हुए वो ऋषि कर रहे हैं, वो एक्चुअली रोम में राम को जगा चुके. एग्जैक्टली. तो हमें लाइट, वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग लाइट एज फूड एंड एयर एज फूड. Once you start doing that, will only happen when you start reducing your contribution to pollution. जी. एक सीधा सा सवाल ये है
आपने कहा कि यू कैन कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू एनर्जी। धीरे धीरे आपकी बातों से हमें ये समझ आया कि जो फूड हम खाते हैं वो हमारे लिए एक्चुअली पॉल्यूटेंट बन जाता है एंड एनवायरनमेंट के लिए भी, जबकि हम एयर से ही या ब्रीदिंग के थ्रू ही अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग भी हैं और इन लोगों को अब ब्रिगेरियन कहा जाता है एंड दिस इज अ कम्युनिटी डेवलपिंग नाउ, और ये शायद यूरोप की तरफ हो रहा है जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है। तो अब जब वेस्ट ही नहीं होगा, अगर हम ब्रिगेरियन बन जाते हैं, वेस्ट ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? और ये एक मेडिकल फैक्ट भी कहा जाता है कि आप खाना नहीं खाएंगे, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो यू आर बाउंड टू गेट वीक। और मेडिकल इज ए रॉन्ग वर्ड, मेडिकल इज ए रॉन्ग वर्ड, हेल्थ इज ए बेटर वर्ड. Stop using medical words, start using health as word. Replace medical by health. Then you will realize that you are worried about health. Don't worry about medical. Start worrying about your health. The moment you shift this paradigm shift to your life, that don't waste time on medical. Start worrying about your health. The moment you start worrying about your health, then that will start telling you that stop contributing to waste. Start reducing contribution to waste. You cannot stop contribution of wastage, but you can definitely start reducing it. Once you start reducing it, then you will realize that you will reach to zero. जी, आप 2 दिन 3 दिन, मुझे नहीं पता आपका क्या पोजीशन है, जनरल लोग 2 दिन क्या सपोज उपवास रखते हैं या 3 दिन का उपवास रखते हैं, या उपवास रखना इसे मूर्खता, उपवास रखना इसे उपवास इसलिए रखते हैं क्योंकि जो वेस्ट मेरे अंदर इकट्ठी हो गई है, आई एम नॉट एबल टू थ्रो इट आउट, सो आई टेक अ उपवास. उपवास इज नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल. यू हैव टू स्टार्ट कन्वर्टिंग योर वेस्ट इनटू एनर्जी. यू आर नॉट सपोज टू, एक्चुअली उपवास में तुम वेस्ट को एनर्जी में ही कन्वर्ट कर रहे हो, एक्चुअली देखा जाए तो. So why don't you convert your waste into energy right from the time you eat? What is the need of doing उपवास? लेकिन उसके बाद हमें एक वीकनेस फील होती है, हमने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है, तो वी आर नॉट एबल टू वर्क, हमारी वर्क एफिशिएंसी no, because you are trying to go abruptly, randomly. You have to start reducing the waste from 100 to 99, 99 to 98, 98 to 97. It takes 1 year. It will take 1 year, maximum 1 year, to reach near zero of contribution of pollution. I am not saying don't stop eating. I am just saying stop contributing to waste. Reduce contribution of waste. I never said anything about eating or not eating. No. Start reducing your contribution of wastage. That is what I am trying to say. Once you start doing that, then automatically in 1 year's time, you will realize that your contribution has reduced to near zero. 100 से 15%, 20% पर आ जाएगा, पक्की बात है. और फिर देखो आपकी हेल्थ को क्या होता है. You get what kind of health you get, what kind of energy you have, what kind of activity, whatever type of, you can travel anywhere in the on earth without any vehicle. अश्विनी जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन कितना है और ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है? इसका सिम्टम क्या है? I told you ना, शंक टेक्नोलॉजी, it gives you measurements. It is like a thermometer. Shank technology has made an instrument called thermometer, kind of thermometer. That thermometer is for temperature. This is for energy. Contribution of waste. How much waste you have converted to, how much reduction in waste contribution you have done, you have achieved, is measurable through shank meter. Thermometer, shank meter. So it is measurable. You can measure it. Means pollution को जो हमारा contribution है, that is to be reduced, and that is the only sustainable model which exists, which can exist. And जो हमारा contribution to pollution है,
वो हम रिड्यूस तब कर पाएंगे जब हम अपने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रैक्टिस डालें, रादर देन कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू वेस्ट। और जो अभी हमारे आसपास हमें वेस्ट दिखाई देता है, जिसको हम सो कॉल्ड पोल्यूशन कहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा अगर ह्यूमन बीइंग ये कमिट कर ले कि मुझे अपना कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन में कम करना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। Shunk technology is now with us. We can measure how much we are contributing to pollution and we can reduce the contribution to pollution. Yes. Okay. So घूम फिर के बात यह है कि shunk technology is the only sustainable model which can reduce or minimize the pollution all over planet Earth or inside me or outside me. Yes. Okay. तो अश्विन जी, आज का बस ये लास्ट सवाल, हमारा समय तकरीबन हो चला है। क्या कोई एग्जाम्पल, कोई केस स्टडी, कोई कुछ भी ऐसा जो हमारे व्यूअर्स को इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाए कि शंक टेक्नोलॉजी को किसी पर्सन ने यूज किया या कहीं किसी जगह पे यूज किया गया और उसका पोल्यूशन कम हुआ और उसका ये बेनिफिट आया किसी पर्सन की लाइफ में या किसी लोकेलिटी में, कहीं भी? क्या कोई भी ऐसी केस स्टडी के बारे में आप बात कर सकते हैं? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप देखो, रामदेव जी को देख लो। रामदेव जी इज स्वामी रामदेव जी जो पतंजलि वाले हैं, ही इज डूइंग दैट ओनली, बट द प्रोसीजर इज डिफरेंट, बट ही इज यूजिंग इनडायरेक्टली शंक टेक्नोलॉजी ओनली। ही इज ट्राइंग थ्रू प्राणायाम, he is converting your waste into energy. That's it. He is not measuring it. He can, if I can prove, you bring any person who is doing pranayam and I can measure and show. Means pranayam is also a part of shunk technology. Pranayam is a part of, pranayam is a integrated part of shunk technology. The only difference is that pranayam has certain conditions to be remembered, to be taken care of to do pranayam, and the shunk technology is a little bit advanced systems it has given, that there you don't need to be so careful about doing there is no condition attached. You can do it anytime. Like pranayam, if you have to do, you cannot do it khali pet. I mean, you cannot do filled पेट भरा हुआ है आपका, रोटी अगर कभी खाई है तो आप प्राणायाम नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। वो बहुत सारी कंडीशंस है उसके लिए। ठीक से करना है, ठीक टाइम पर करना है, कैसे करना है, एक पोस्चर होना चाहिए, सो मेनी कंडीशंस आते हैं। शंक टेक्नोलॉजी इज ए मेजरेबल सिस्टम, तो इट कैन डेफिनेटली शो यू थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स, lakhs of examples. Swami Ramdev ji is doing, I can say that Swami Ramdev ji is showing you preliminary shunk technology, preliminary level of shunk technology only. प्रिलिमिनरी लेवल तो वही है जो प्राणायाम से लोग अटेन कर पाए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्राणायाम करके अपनी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट लाए हैं, और स्वामी रामदेव जी खुद ही एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। ही हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड हिज एज। जो आज उनका फेस हमें दिखता है, जो बॉडी की स्ट्रेंथ दिखती है, वो 20 साल पहले से बेहतर है। तो ही इज एक्चुअली इनटू रिवर्स एजिंग, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, विच ही हैज अटेन्ड थ्रू प्राणायाम, ही कुड अटेन दैट। तो ये हो गया शंक टेक्नोलॉजी का प्रिलिमिनरी लेवल का एक एग्जाम्पल। क्या एडवांस लेवल का या इससे एडवांस लेवल का हमारे पास कोई एग्जाम्पल अवेलेबल है अभी? बिकॉज शंक टेक्नोलॉजी इज अ वेरी टेक्नोलॉजी। या अभी हमारे we have organized almost 5,000 camps across country. It was demonstrated, this system was displayed, demonstrated by Science Express train across country, traveled in 22 states for 6 months. And the technology was demonstrated in Vigyan Bhavan, in climate change conference itself. It has been talked about, it has been displayed. Punjab Kesari newspaper organized 10 camps
in Delhi every week, and almost 200 to 250 participants used to be there. So it is a well-known, well-established system. The only thing is that public is afraid of, especially the educated community is afraid of that if this happens, what will happen to their life? And they also know well that their life will improve. Corona may people who have used this system never got corona, or if they got it, they got rid of it instantly. Doctors were telling that do this. They were not naming the shunt technology. Only problem is that they were not saying that it is a shunt technology, but they were following the practice. We had minimum effect of corona in our country. Why? One is that vaccination. Second is this shunt technology. This shunt technology used since 2004. This has been displayed in India International Trade Fair for almost 6 years. 14 days. Lakhs of people visiting the pavilions. तो शंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से भारत कोरोना जैसी त्रासदी से बहुत कम नुकसान के साथ उभरा है, ये एक फैक्ट है। शंट टेक्नोलॉजी हो सकता है कि हम मान सकते हैं कि इसके लिए शंट टेक्नोलॉजी को हम थैंक्स कह सकते हैं, यस, क्योंकि प्राणायाम अगर प्रिलिमिनरी स्टेज है शंट टेक्नोलॉजी की, तो प्राणायाम प्रैक्टिशनर्स हमारे देश में करोड़ों हैं और उसका इम्पैक्ट भी हम समझते हैं। एंड यस, शंट टेक्नोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू एनर्जी कुड बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, ऐसा लगता है। हालांकि खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक शायद इस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। लेकिन I can give you an example that we did a project called Project SAP, the school adoption program, and we adopted few schools, and there we made the students practice for 2 weeks or 1 week, depending on what duration the school offered us. And the results of those teenager community, they are mind-boggling. They are amazing. I mean, I was surprised that the teenagers are able to pick this technology so fast. We have results. We have reports of all these kids, what they felt after the 1 week training, after the 1 week practice. What are the results they have shown, and their values, improvement in the values of शंख मीटर से उन्होंने उनको नापा, रोज नापते थे हर दूसरे दिन, मतलब जो प्रोसीजर जो बना हुआ है। तो जब स्टार्ट करते थे तो वी यूज्ड टू मेजर, एंड व्हेन वी यूज्ड टू फिनिश वी यूज्ड टू मेजर। ऑलमोस्ट 50 to 100% improvement was visible in 1 week, and the results are all available in our Ambala office. जी, So this is the power of शंख टेक्नोलॉजी कि टीनेज कम्युनिटी में भी हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। Senior citizen, we have tested. Actually, what has happened was that first we were bothered about senior citizens. So Punjab Kesari organized our 10 senior citizen camps across Delhi, and they found the result system is so beautiful. Every senior citizen blessed the system from inner part of their heart. They said that, sir, आप पहले क्यों नहीं आए? Then we tested on teenager community, and now we are working on this in between community, in between, that is between 20 and 60. Now we have started working on that this community from 20 to 60 for the last 1.5 months, 2 months maybe. जी, we announced ASHO chart technology. Actually, we have announced one technology called ASHO chart technology. That ASHO chart is very, very useful for the employees relationship. That is very useful for
employer to employ people with AshoChart parameters. It has 5 parameters and they are beautiful parameters. Shunt technology is meant to improve AshoChart of the individual and the results which corporate will get from those employees you cannot imagine. You give me a chance. You give me a corporate. I am ready to adopt a corporate who wants to improve his productivity. I will charge money, but I will charge the money after the first session. After that, I will take advance. But first session, I will do free of cost. If they get benefit, then I will bill the amount, and you will have to pay to me 11,000 rupees per person. Ji. Now AshoChart technology is available, जो कि शंट टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है. मिडिल जनरेशन, बिकॉज दैट इज द जनरेशन विच इज फास्ट, which is moving towards becoming a senior citizen. They are the one who are actually guiding teenagers. They are the one who are taking care of senior citizens, and they are the one who are they are the one who are going to deliver teenagers, fresh teenagers. जो मिडिल एज है वही किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी राष्ट्र की वर्किंग पॉपुलेशन कहलाई जाती है. और वर्किंग पॉपुलेशन ही अगर हमारी वेस्ट से भरी हुई है तो वी कैन ऑलरेडी गेट वेस्ट एंड पोल्यूशन एज एन आउटपुट. तो उसका रिकवर करना इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट. एंड AshoChart टेक्नोलॉजी इज नाउ अवेलेबल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. आप अब तैयारी कर रहे हैं to introduce this AshoChart technology, and shunt technology is definitely need of humanity. I would like to make an announcement. I would like to make an announcement today that from today I am launching a program of I call it EAP or CAP, you can call it, Corporate Adoption Program. Earlier we did senior generation project SAP, we did for senior generation, then for teenager school adoption program we did. Now from today onwards I am launching the program called CAP, Corporate Adoption Program. And in this program I would like to adopt corporates. Any number of corporates I can adopt simultaneously. So CAP is available. Now you can approach me and I will improve the productivity and the life of each individual employee of the corporate sector. So Project CAP is now launched today, declared open today. Ji. Project CAP is now has been launched just now on 27th June 2023, and definitely global population की नीड है. भारत को हम विश्व गुरु की तरह देखने ही लगे हैं. ये बात बाइडेन भी कह रहे हैं, पुतिन भी कह रहे हैं, और हम तो जानते ही हैं. भारत को लीडरशिप रोल अपना निभाने के लिए इस वर्किंग पॉपुलेशन को ठीक करना ही होगा, जिसके लिए अब हमारे पास प्रोजेक्ट कैप है. तो आज के लिए अश्विनी जी इतना ही. आपके समय, आपकी गाइडेंस, आपकी टेक्नोलॉजीज के लिए आपको धन्यवाद तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो विशेष रूप से बेहतरीन है, और आपको इसके लिए मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ. आज के लिए इतना ही. प्रणाम. प्रोजेक्ट कैप फॉर वर्किंग पॉपुलेशन फॉर द मिडिल एज जनरेशन, वो लोग जो अभी परिवार की जिम्मेदारियों से घिरे हैं, अपनी शरीर में आने वाले चेंजेस से जूझ रहे हैं, न खुद को बूढ़ा महसूस करते हैं, न करना चाहते हैं, लेकिन अब वे जवान शायद नहीं रहे. उन लोगों के लिए जिनके रोजमर्रा की दिनचर्या में स्ट्रेस ज्यादा है, एंजॉयमेंट न के बराबर है, उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि होलिस्टिक हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ या
रिवर्स एजिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अपनी अब इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, जितना कर सकते थे कर चुके। उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि टीनेजर्स को संभालना आज की डेट में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जो जितना हो रहा है बस उतना होने दो। जिन्हें लगता है कि हमारे माता पिता ने तो पता नहीं क्या किया है अपनी लाइफ में, पता नहीं हम क्या कर पाएंगे, एंड हु आर लिविंग इन एप्रीहेंशन। यस, shunt technology has come like a blessing for all of us. Why don't we adopt it? Why don't we gasp in the warmth of shunt technology? This is an umbrella over us, and we just have to migrate ourselves under this umbrella, which is now called Project CAP. आज के लिए इतना ही। मैं हूं निधि कंसल, कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला की केयर टेकर, स्क्वायर्स फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस की कोऑर्डिनेटर। आज के लिए इतना ही।